में पाखापाखि 2.5 लाख कोटी वृद्धि। आत्मनिर्भर भारत लगी विजन महिला और चाषी सशक्तिकरण को फोकस। उड़ान योजना रे हेब 120 विमान बंदर। प्रति जिला हस्पिटाल प्रतिष्ठित हेब कैंसर केन्द्र। मध्यवित्त को निर्मला आश्वस्ति। नुआ टैक्स स्लैब रे हेबे मालामाल। वार्षिक 12 लाख आय थिले देबाकू पड़िबनी कौनसी आयकर। बंचिब 80,000 1 लाख टंका मासिक आयकारी को भी देबाकू पड़िबनी टंका किए। आईटीआर फाइल सिम 2 ରୁ 4 वर्ष को वृद्धि। टीडीए सीमा 10 लाख को वृद्धि। वरिष्ठ नागरिकों रिहाती सीमा जबल। बजेट में सस्ता महंगा को नहीं विशेष आशा देलेनी अर्थमंत्री। 36टी जीवन रक्षाकारी औषध, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, कपड़ा सामग्री, ईवी कार्स, सामुद्रिक खाद्य, वैद्युतिक सामग्री, चमड़ाजात सामग्री, लिथियम बैटेरी, कोबालट पाउडर, फ्रोजन फिश सस्ता। फ्लैट पैनल डिस्प्ले और हाथ तैयारी कपड़ा है महंगा। निर्वाचनमुखी बिहार लगी अर्थमंत्री खोलीदेले पेड़ी। प्रतिष्ठा हेब मखाना बोर्ड और जातीय खाद्य प्रजुक्ति औद्योगिकता और परिचालना प्रतिष्ठान। पाटना विमान बंदर संप्रसारण। प्रतिष्ठा हेब 4टी नुआ ग्रीनफिल्ड विमान बंदर। केनाल प्रकल्प लगी अर्थ मंजूर। बजेट उपस्थापन बेले भी पिंधिले बिहारी मधुबनी साड़ी। केंद्र बजेट नहीं नूतनत्व। देशवासी को कराई प्रतारित। केंद्र सरकार को विरोधी टार्गेट। लोकों आय नथिबा बेले आयकर रिहातीर माने किछि नुहे बोली कहिला कांग्रेस। निजुक्ति सुजोग लगी बजेट नहीं व्यवस्था। संपूर्ण काल्पनिक बजेट नहीं भित्तिभूमि को गुरुत्व। पुणे अटकिला श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन व्यवस्था। आज भी नाच मंडप में आरंभ हो पारानी धाड़ी दर्शन। बारंबार दिन गड़ाई चली राज्य सरकार। आईन मंत्री बयान और श्रीमंदिर प्रशासन भितर रहुनी तालमेल। हुंडी स्थानांतर पर अटकी प्रक्रिया। प्रस्तुत रही रैंप। विभिन्न निजोग सह आलोचना जारी। भद्रक माईदापुर दुर्घटना। शव नहीं जाउतबा बेले शव होईगले 3 जण। जंपर को पछरु पिटिला आंबुलांस। पुओ और ज्वाई सह 3 जनकर चलीगला जीवन। सुंदरगढ़ बड़गा महावीर छकरे ट्रक माड़ी जिबारु शिक्षयित्री उड़ीगला प्राण। अल्प के बर्तिले अन्य 2 संपर्कीय। कलाहांटी पुलिस को बड़ सफलता। काबू हेले अंतरराज्य डकायती गैंग। झारखंडर 8 जन अभियुक्तों को गिरफ। नगद 3.5 कोटी टंका सह बंदूक और गुड़ी जबत। धर्मगढ़ में होइतिबा देशी मद भाटी लुट घटना रे थिले संपृक्त। आज संपूर्ण खबर को मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला अंतर्गत तोडका जंगल में पुलिस और माओवादी मध्य गुली विनिमय होइछि। पुलिस एनकाउंटर रे 8 रु अधिक माओवादी निहत होइतिबा नै सूचना आसुछि। एबे भी जंगल मध्य गुली विनिमय जारी रहिछि। एसटीएफ, डीआरजी एवं सीआरपीएफ जवान कॉम्बिंग ऑपरेशन बेले पुलिस को मिली एही बड़ सफलता। बीजापुर तोडका जंगल में वर्तमान पुलिस और माओवादी मध्य गुली विनिमय चली। घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन जारी रही। तेरे पुलिस माओवादी मध्य वर्तमान गुली विनिमय चली। जंगल में माओवादी लुचि रही नहीं पुलिस को गुइंदा संस्था सूचना देता। यापर पुलिस और माओवादी मध्य गुली विनिमय वर्तमान जारी रही। कॉम्बिंग ऑपरेशन चली। घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन चली। 8 रु अधिक माओवादी निहत होइतिबा नै जहां वर्तमान खबर आसुछि। अधिक आलोचना करबा आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती मालकानगिरी रिपोर्टर ईश्वर पटनायक। ईश्वर, वर्तमान 8 जन माओवादी निहत होइतिबा नै जहां बड़ सूचना आसुछि एवं वर्तमान मध्य कॉम्बिंग ऑपरेशन चली। तेबे किभଳି पुलिस को एही सूचना मिलिथिला माओवादी गतिविधि नै? पुणे बड़ खबर गोटे आसुछि। 8 जन माओवादी वर्तमान निहत होइछन्ती। लगातार भाव आप देखुए प्राय मसे है विशेषकर आपंकर बीजापुर आरंभ कर सुकमा एवं नारायणपुर जो सब बॉर्डर पर्यंत लगी से जाए ऑपरेशन को जोरसोर कराई। गत किछि दिन पूर्व जिते गृहमंत्री अमित शाह आसते राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलित भाव गोटे
योजना प्रस्तुत करते केमती से सब अंचल को माओ मुक्त एरिया करिया बोली तेणुक बर्तमान से माने जो स्ट्राटेजी ग्रहण कर विभिन्न स्थान रे कैंप जाक बीएसएफ सीआरपीएफ कैंप जाक सब बसैले सेमानकर जो इनपुट आसी जोटा इंटेलिजेंस इनपुट ताकू बर्तमान स्ट्रंग कर लगुंट तेणुकर आप देखुए मसे है पुलिस को बड़ बड़ सफलता मिली आज गोटे बड़ सफलता मिली 8 जन माओवादी निहत होती जहाँ भी घटना सूचना मिली सका 8 घटिया समय माने जो ऑपरेशन बाहर थे ऑपरेशन करुले से समय माओवादी सब मुहांमुही होते गुली चालना होता किंतु एथर लगातार भाव में गुली चालना होता किसी समय ब्रेक रे गुली चालना होता जो सर्च ऑपरेशन कराला 8टी माओवादी शरीर मिलता किसी अस्त्र शस्त्र मिलता सूचना मिली निश्चित भाव माओवादी और पुलिस मध्य गुली विनिमय जारी रही है कि बड़ सूचना हो 8 जन माओवादी पुलिस गुली बर्तमान निहत होती बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना दर्शक बंधु आपको सीधा सड़क नहीं जाऊँ निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री प्रेस मीट को coming into the parliament next week. So if we are talking of reform inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID, and which has contributed to India's food security. The proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beach to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention. Not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we are giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain energy security. Insurance sector's FDI limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with 2 things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that.
And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. And the next year, coming years, estimate is also being given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as the opening statement. There's a lot more to say. But as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. 225. Mic, please. Ma'am, this is Srini Chaudhary from NDTV Profit. I just wanted to understand, ma'am, ma'am, you said the new income tax bill will come next week. Will that be in the form of draft, and where you are also going to take stakeholder comments on that? Yes, as a bill, any bill goes to the standing committee, and the standing committee will of course consult with so many stakeholders, and then it will come back to us, and if necessary, any more amendments that need to be brought in, we'll bring it in and take it forward in the House. So do we expect implementation in this fiscal year, in FY26? Do you expect what? Do we expect the implementation? Well, let it get passed. I hope it will get passed without much of a difficulty, but it is only after it's passing. Sure. Thanks. 35. Fred. Ma'am, Timsi Jaipuria, this side from CNBC TV 18. As you said, this is a very responsive government, which is why government decided to give these tax rebates. But given the structure that you have announced, ma'am, up to 12 lakh is the rebate. Any reason why this rebate has been hiked from 7 to 12 lakh? Is it that the incomes or salaries were not growing up to the mark, which is why government thought that this rebate needs to be given? And also, how do you make up for this 1 lakh crore of revenue loss? Will it not impact the budget estimates? Where will you get this money from? I think the first question is, you said that this, when the incomes are not growing. This is an income tax. Only when there is an income, then we are talking of the tax. So income has to grow to the level to discuss about the tax. Now, why from 7 to 12 lakh? It is something like, it was earlier 2.2 lakhs. When 2014 it became 2.5 lakh, nobody is going to pay tax. When there was a 2019 that, we said 5 lakhs, nobody is going to pay tax. And we said it was raised to 7 lakhs. And now it's being raised to 12 lakhs. So this is a perception that the government feels that, on the average 1 lakh per month, if you have, then you need not pay tax, which means that, we are doing it in two ways. One is we are reducing the slab rates. We are expanding the slabs. If you would have noticed, the slabs are now 0 to 4 to the uniform slabs, and there is a gradualism. There was a thing when we had earlier 20%, and it was jumping to 30%. Now it is 20, we have introduced 25 also. So it is a gradual thing which has been done. Now this benefits every one of the taxpayers, because whatever benefits which has come from the slabs gets transmitted across. So that everyone gets a benefit. Now the second part, FM decided that, some people should get a little more benefit than merely slab rate reduction could have given. And so therefore extra rebate. So slab rate reduction for everyone, and extra rebate for 7 lakhs already getting it, now 7 to 5 lakhs more people have been added. So this is the philosophy behind it. And as you said, why you do it, I think we expect that all that money which they gave, it comes back to the economy in either consumption, savings or investments, in whatever way they choose to do. I just want to add to that. If you compare what we've done today with what prevailed in 2014 under the Congress government, what we are, most often the narrative is, we should put money back in the hands of the people. I want to please give this comparison for your consideration.
If you compare it with the 2014 tax rates under the Congress, for somebody who's earning 8 lakhs, nearly 1 lakh more money is in their pockets today because of the amendments that we've brought in. Meaning, 1 lakh income tax in 2014 is 0 income tax now. So that money is going back to the people in their hands for those who are earning 8 lakhs. For those earning 12 lakhs, 2 lakh was the income tax in 2014 versus today 0 which is proposed. Meaning nearly 2 lakh more money in the pockets of people who are earning 12 lakh. Alright, did I stop it there? As Finance Secretary rightly said, across the board everybody is getting benefit because the rates have also been brought down. Not just the rates being given to up to 12 lakhs. Rates for everybody is being brought down. As a result, take somebody who earns 24 lakhs in a year. The income tax on them in 2014 was 5.6 lakhs. 2014. For them, now it is only 3 lakhs. The rate change has benefited somebody who earns 24 lakh as well. So 2.6 lakh rupees more in the pocket of people who are earning 24 lakh. So it is not just those who are up to 12 lakh because they are not paying any tax at all, because rebate is given to make up for the tax amount which they have to pay. It is not just up to 12 lakh. Even for others, benefit is accruing, and compared to what it was in 14, that much amount of money is going back to those respective money earners. Just compare it with 24 tax rates, which is prevailing now and what is being proposed. I would like to draw the comparison. 8 lakh people, many, those who are earning 8 lakhs. 30,000 rupees more is being put back into their pockets, meaning they would be paying 30,000 in the prevailing tax, 8 lakh salaried wale. Now they pay 0 in the new proposal. Similarly, 12 lakh salary or income wale would have 80,000 rupees tax to pay in the current prevailing taxation rates. They would have 80,000 rupees now go back to their pockets. They don't have to pay that tax. Go to the 24 lakh and compare with the present rates. Present prevailing rate, they have to pay 4.1 lakh rupees as tax. We are saying now they will have 1.10 lakh in their pockets, which they don't have to pay as tax. So we have put good substantial amounts into the pockets of people who deserve. अरे रह गाड़ी रख सिग्नल भांगी के आसिलु तो चल छाड़ी दियंतु सर इमरजेंसी अछि सर हेड ब्लास्ट जदि बुद्धि खर्च करिवार अछि तबे जुपी लूडो रे लगांतु zupi.com रु ऐप डाउनलोड करंतु खेलंतु लूडो जितंतु लक्षाधिक कैश याकू घरे लगाओ तो विवाह कथा तो जणा नहीं किंतु घर जमारू भांगिबनी रूमटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं रूमटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड पहाड़ रेटा हाइकिंग स्टिक भी हेई परिबो चूड़ा आमर पारंपरिक निरापद आहार तेबे अनहाइजेनिक परिवेश रे प्रस्तुत और गच्छित होइतिबा खोला चूड़ा विभिन्न रोगर कारण होइथाय संपूर्ण हाइजेनिक प्रोसेस रे प्रस्तुत भारत चूड़ा पाउडर I am a world skill champion. I am an automobile expert. We run startups. Industry 4.0 is here. I am a proud mariner. Welding is my passion. We are robotic engineers. Home away from home. CV Raman Global University, Odisha. Homegrown, world class. বয়স আসিছি ফগুণ দেহরে মোর ফল মু পাইছি তমকু প্রথম থর তুমি যদি দেইথিল সরধারে ফুলটিয়ে ভাবি আপনার
भाभी आपणार आपण किंतु दर्शक डाकिया रेकर्ड डांस करूछंती बहुत मात्रा रे यात्रा को बिगाड़िबार अनेक गुडी कारण अछि गोटे होची जो अति आधुनिक कथा यात्रा कलाकार को नेले यात्रा लोकप्रिय हुए सिनेमा कलाकार को नेले सिनेमा लोकप्रिय हुए इबे जो या भितर जो मिसेई मासेई दूचंती सेहिथि पई वर्तमान यात्रा गोटे जराजीर्ण परिस्थिति आज यात्रा उपरको लोक आंगुली उठाउछंती जीवनर पथर बंधुर रास्ता रे हातरे हाथ दे चलीबार कथा दे तमे आज अधा बाटरे मते चली जाउछ इमितिका एक दोछकरे मते ठिया करे देछ मु जानि करूनी मु आगु जीवी ना पछु परिस्थिति को जदि पचारुची एथि पई दाई की प्रतिध्वनि रे उत्तर आसुची तमे 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 काले मु मु ये जो डायलॉग आपण कहउछंती वॉइस टी कोड बाहर छी भितुर माने भितुर माने हृदय भितुर मन देई कहउछ जो कहली ब्रॉडकास्ट ए पॉडकास्ट शो आज राती 9:30 ब्रेक पर पुनः स्वागत फेरिबा खबर को पुणी अटकिला श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन व्यवस्था आज भी आरंभ हो पारानी नाट मंडप में धाड़ी दर्शन बारंबार दिन गड़ाउंट श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार आईन मंत्री बयान और श्रीमंदिर प्रशासन भितर रहुनी तालमेल श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक कहले धाड़ी दर्शन पर अनुमति पाट रही अनुमति मिलवा पर ही होई पारिबो दर्शन व्यवस्था हुंडी स्थानांतर पर अटकी धाड़ी दर्शन व्यवस्था प्रस्तुत रही रैंप विभिन्न निजोग सह मध्य जारी रही आलोचना अनुमति पर ही लागू हेब धाड़ी दर्शन व्यवस्था मुझे कहली पूर्व भी कही तार किसी गोटे परमिशन पार्ट भी अच्छी से परमिशन पार्ट आम अपेक्षार अच्छु तत्सहित जो विभिन्न निजोग सहित अच्छी पर्यायक्रमे आम प्रस्तुति आलोचना करूँ किसी निजोग भी माने जो रही सहित भी भितर आम सारू और जो परमिशन पार्टी अच्छी से आसला आम प्रारंभ करूँ आम रैंप प्रस्तुत होगी अच्छी वंस परमिशन पार्ट आसो जेहेतु से आम जो स्पेसिफिक प्लेस अच्छी हुंडी अच्छी तो परमिशन पार्टी आसला से आस भद्रक 16 नंबर जातीय राजपथ मैतापुर छक निकट में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन 3 जनकर मृत्यु होती गत विलंबित राति भारसाम्य हराई ट्रलर को धक्का देता आंबुलांस कटक एससीबी मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था गतकाली भोगराई शारदापुर अंचल दिवाकर जेना मृत्यु होता निज बापा मृतदेह को नहीं परिवार सहित घर को फेरिबा बाटरे यह दुर्घटनाटी घटी आंबुलांस ड्राइवर समेत मृतकों पुओ बापी जेना और भिणोई सुधांशु दलाई मृत्यु होती मृतकों स्त्री बासंती जेना को गुरुतर अवस्था उद्धार कर स्थानीय लोके मेडिकल भर्ती कर कटक रु ये डेड बॉडी नहीं जाऊले बालियापाड़ रास्तार एक्सीडेंट ये स्त्री और 2टा पुओ ना सरीनी आमको तो एपर्यंत भी देखो ना डेड बॉडी आ मो मामू तो आगे मरी जाते पुओ भी मरीगले जड़े पुओ थे परिवार आ कहीं ना 2टा पिला अच्छी स्त्री अच्छी मामू पुअर आ मो कका जी मरीगले कका भी शांत थे भेणई से शिक्षयित्री माड़ी गला ट्रक घटनास्थल में शिक्षयित्री मृत अल्पके बर्तिले अन्य 2 जन संपर्कीय घटना पर सेठाकार उत्तेजना प्रकाश पाइबा सह रास्ता रोक कर उत्त्यक्त लोके सुंदरगढ़ जिला बड़गां थाना 10 नंबर राज्य राजपथर महावीर छक निकट में घटी मर्मन्तुद दुर्घटना शिक्षयित्री प्रियंका बेहेरा निज काका बैकुंठ बेहेरा और भाणजी चंद्रिका बेहेरा सहित बाइक रे रास्ता पारिहेला बेलू एक ट्रक माड़ी जाइतिला फल प्रियंका घटनास्थल में मृत्यु होता बेले काका और बाणजी बाइक रु छिटकी पड़ा फल सामान्य आहत होती घटना पर सेठारे उत्तेजना प्रकाश पाई उत्त्यक्त लोके क्षतिपूरण दाबी रे रास्ता रोक कर कलाहांडी जिला पुलिस एक अंतरराज्य डकायती गैंग को धरिबारे सफल होईछि। कलाहांडी एसपी अभिलाष जी नेतृत्व में धर्मगढ़ थाना पुलिस एक बड़ धरणर डकायती घटना रे संपृक्त थिबा 8 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि। सेमानंको निकटरू नगद 3,51 लाख टंका बंधुक गुली अपराध रे व्यवहृत गाड़ी एवं मारणास्त्र आदि जबत करिछि। तेबे गिरफ्त होइतिबा समस्त अभियुक्त झारखंड राज्यर बोली सूचना मिलिछि। गत 30 तारिख रे धर्मगढ़ ठारे थिबा एक देशी मद भाटी रे एही डकायत संघटित होइतिला। विलंबित राति प्राय 8 जन डकायत मारणास्त्र धरी डकायत करने उद्देश्य एही भाटी रे पशिथिले। सेठारे बंधुक एवं मारणास्त्र देखाई धमक दे टंका लुटि नेथिले। एने धर्मगढ़ थाना रे एक मामला रुजु होइतिला। डकायतों को धरिबाकू कलाहांडी एसपी नेतृत्व में एक स्वतंत्र टीम गठन करा जाई विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ आरंभ करा जाई गिरफ्त करा जाइतिला।
छात्री मृत्यु पर चक्षु दान कले परिवार लोके। जाजपुर रोड थाना दानगदी स्थित पृथ्वीराज विद्यापीठ निकट में गतकाली होइतिबा दुर्घटना रे गुरुतर आहत होइतिबा छात्री चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइछि। मृत्यु पर चक्षु छात्री दान करिसंती तांको परिवार लोके। तेज दुर्घटनार शिकार होई गुरुतर अवस्था कटक बड़ मेडिकल चिकित्सित होता बेले गतकाली राति नवम श्रेणी छात्री माड़ी जाइतिला हाइवा। स्थानीय लोके दुई छात्री आहत अवस्था उद्धार कर धानगदी मेडिकल भर्ती करथिले। हेले अजितांक स्वास्थ्य अवस्था अधिक गुरुतर हेबारु तांकु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जाइतिला। मात्र चिकित्साधीन अवस्था गतकाली तांकर मृत्यु घटिछि। दर्शक बंधु समय सरी न्यूज टाइम को ये रखुचु। अधिक खबर पर लॉगिन करता वेबसाइट www.nandighoshtv.com। विदाय दियंतु। नमस्कार। फैशन प्लस शनिवार राति 10:30 रे। एठू आरंभ असली खेल हे पुओ आसुन देखिया ढेंकानाल का सहित आम कथा होछु। तोर लंबा बेणी